Hello बच्चों, how are you all? I hope you all are doing well. Today we'll study about components of food. So let's get into it. Every time you bite a juicy apple, a slice of cake or any other food stuff, you can feel that they differ from one another. कैसे differ करते हैं? Juicy में differ करते हैं, they taste में differ करते हैं. This difference in taste is due to the various chemical constitutions present in the food, which are called nutrients. तो जो भी difference create हो रहा है in food में, वो किसकी वजह से है? Nutrition की वजह से है. All individuals need these nutrients for proper functioning of their body. However, the amount of each nutrition required varies according to age, sex, body, weight, ऑक्यूपेशन एक्सेट्रा. तो आपने देखा होगा आप और आपके पेरेंट्स में जो फूड और जो न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है वो डिफ़र करती है. मे बी यू हैव ब्रदर एंड सिस्टर, तो आपकी जो सिस्टर है वो शायद कम न्यूट्रिशन रिक्वायर करती है, या जो मेल होते हैं वो ज़्यादा न्यूट्रिशन रिक्वायर करते हैं. तो इसीलिए यहाँ पे न्यूट्रिशन वेरी करता है. लेट्स गेट इनटू द टाइप ऑफ न्यूट्रिशंस. देयर आर 5 kind of nutritions. Carbohydrates, fats, proteins, vitamins, and minerals. Apart from this nutrition, water and roughage are another important components of food. तो ये जो 5 components है, इसके अलावा हमें और भी चीज़ें न्यूट्रिशन, वाटर और रफेज हमारे फूड में मिलते हैं. All these nutrients are used either as energy source or for growth and maintenance of our body parts. तो आप सोच रहे होंगे ये सारी चीज़ें हमारे फूड में प्रेजेंट है, तो इसका कोई फंक्शन तो होगा. तो ये हमारी बॉडी को मेंटेन करने में, हमारी बॉडी के ग्रोथ में और हमें एनर्जी प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं. ईच काइंड ऑफ न्यूट्रिशन हैज इट्स ओन रोल फॉर अ पर्टिकुलर फंक्शन इन अ बॉडी. सो एज वी डिस्कस्ड जस्ट नाउ, दे हैव अ फंक्शन, अ पर्टिकुलर फंक्शन. नाउ लेट्स स्टडी अबाउट अ पर्टिकुलर वर्ड अराउंड दिस टॉपिक, विच इज न्यूट्रिशनिस्ट. A person who advises others on matters of food and nutrition and their impacts on health is called nutritionist. आपने देखा होगा कई बार हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, वो हमें बोलते हैं ना कि आप न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाओ, उनसे एडवाइस लो अराउंड द मैटर ऑफ फूड. So these are the people who are nutritionists. The main carbohydrates found in our food are in the form of starch and sugar. तो हमारे फूड में सबसे ज़्यादा मोस्टली क्या प्रेजेंट होता है? 5 टाइप्स ऑफ हमने न्यूट्रिशंस पढ़े, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स मेजर पार्ट होता है. तो कार्बोहाइड्रेट्स में क्या मेन चीज़ें हैं? इट इज़ 1 स्टार्च एंड शुगर. ऑल द कार्बोहाइड्रेट्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. सो व्हाट इट इज़ मेड अप ऑफ? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. Sugar is the simplest carbohydrate. Another form of carbohydrate is starch. Starch molecules are more complex than sugar. In fact, these are made up of many sugar molecules. Hence, they contain more energy than sugar molecules. Okay, let's understand this by understanding starch and sugar. Starch complex है, sugar simple है. Starch complex कैसे है? Starch is made up of many sugar molecules. For example, let's say starch is made up of 4 sugar molecules and sugar is just 1. So it is very easy to understand that starch has more sugar, so they gives more energy. Alright? Now let's see the sources of carbohydrates. So major sources of carbohydrates are cereals, which are wheat, rice, maize, etc. and fruits like mango, banana, melon, etc. and vegetables like potato, sweet potato, beetroot and etc. and also jaggery.
So you must have had these all food in your diet as well, right? Okay, let's move on to the role of carbohydrates in our diet. Carbohydrates gives us energy to our body for carrying out our daily activities. Next, carbohydrates add flavors to our food. And next, carbohydrates are important for the correct working of our brain, heart, digestive and nervous system. So basically अभी हम लोग क्या पढ़ा रोल में कि carbohydrates are very important for our daily activities, right? Why? It gives us energy. It also adds flavors to our food. अब flavor का example कैसे देखते हैं? हमने सभी ने स्वीट पोटैटो खाया है, तो स्वीट पोटैटो थोड़ा सा स्वीट होता है, राइट? हमने शुगर्स खाया है स्वीट्स में, तो वो सब मीठे होते हैं. तो दैट इज़ वाई वी कुड अंडरस्टैंड दैट दे एड फ्लेवर्स टू आवर फूड. नेक्स्ट, दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर करेक्ट वर्किंग ऑफ आवर ब्रेन. तो हमारा ब्रेन, हार्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम, इनफैक्ट आवर होल बॉडी needs energy, right? So they also provide energy for proper functioning. Okay, let's move to the next page. Now, let's perform an experiment. The aim of the experiment is to test the presence of carbohydrates, which is starch, in wheat. So, what all we will require? We will require a few grains of wheat, iodine solution, test tube, Bunsen burner, filter paper, dropper and distilled water. Now we will see all the materials required. We will require a few grains of wheat, iodine solution, test tube, Bunsen burner, filter paper, dropper and distilled water. So आप लोग परेशान मत होना और हम देखेंगे कि ये सारी चीज़ें हम कैसे अरेंज करेंगे. तो हमें क्या चाहिए? Wheat, wheat के कुछ ग्रेन्स हम अपने घर में भी या बाहर से भी ले सकते हैं. Then comes the iodine solution. So iodine solution आपको जो फर्स्ट एड बॉक्स होता है उसमें भी प्रेजेंट होता है, तो आप वहां से ले सकते हैं. और you can prepare it by taking 5 grams of iodine and dissolving it in 100 ml of distilled water and then adding 2 grams of potassium iodide. Alright, now let's start it. Take grains of wheat in a clean test tube. Alright. So this is a test tube and we have taken few grains of wheat. Pour 10 ml of distilled water into the test tube. Now we'll add water. So distilled water कहाँ से आएगा? So what you can do is boil some amount of water and then you can just cool it down and then can use for this experiment. Now, next step is to boil the contents So the next step is to boil the contents of the test tube for about 5 minutes. After the test tube has cooled down, filter the contents of the test tube through a filter paper. Okay. So अब हम जो टेस्ट ट्यूब में हमने पानी डाला और वीट डाला, अब हम इसको बॉईल करेंगे. ऑलराइट, और फिर हम इसको कूल डाउन होने के लिए छोड़ देंगे. नेक्स्ट, हमने देखा था फिल्टर पेपर का भी यूज था, तो हम उसका क्या करेंगे? We will put the filter paper on the test tube and we will strain it. हम उसका सारा पानी निकाल देंगे. Now the next step is take 2 ml of filtrate in a test tube. Add 2 drops of iodine solution to it by dropper. अब जो हमने पानी निकाल लिया है उसमें हम 2 drops डालेंगे iodine solution का using dropper. Now let's get to the analysis part. You will analyze that the color of the filtrate turns blue-black.
like this. As you can see in the picture, the blue-black color of the solution. Now, what we will get to learn from this experiment? That appearance of black-blue color shows the presence of carbohydrates, starch in wheat. इससे हमें ब्लैक ब्लू कलर से क्या पता चला कि व्हीट में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है. और कौन सा कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है? स्टार्च प्रेजेंट है. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेप. There is one more thing which we must know, which is, let's get to it. Carbohydrates can be simple or complex based on the chemical structure. The classification is also based on how quickly our body can ingest and convert them into the energy. तो कार्बोहाइड्रेट जैसे हमने पहले देखा शुगर्स और स्टार्च होते हैं, बट वो सिंपल और कॉम्प्लेक्स भी होते हैं बेस्ड ऑन देयर केमिकल स्ट्रक्चर. जो उनका क्लासिफिकेशन है कार्बोहाइड्रेट्स का, वो बेस्ड है कि हमारी बॉडी उनको कितनी जल्दी एसिमिलेट कर लेती है, कितनी जल्दी उसमें से एनर्जी निकाल लेती है, राइट? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स कंटेन डाइटरी फाइबर्स एंड स्टार्च दैट आर हेल्दियर दैन शुगर्स. तो जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जिसका क्या एग्जाम्पल पढ़ा था हमने? स्टार्च. वो उसमें मोस्टली फाइबर्स होता है, डाइटरी फाइबर्स होते हैं, जो ज़्यादा हेल्दियर होते हैं शुगर से. इसीलिए पता क्या बोलते हैं कि हमें मिठाइयाँ कम खानी चाहिए, क्योंकि मिठाइयों में शुगर्स मोस्टली होता है. ओके, अनलाइक सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स आर obtained from whole foods and also contain vitamins and minerals. तो जो दूसरे टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं विच आर सिंपल, वो उसमें प्रेजेंट होता है होल फूड, क्योंकि वो होल फूड से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं. एंड एज सिंपल एज इट इज़ दैट इट कंटेन्स विटामिन्स एंड मिनरल्स. तो उसमें विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी. ऑलराइट, नेक्स्ट, the best source of the carbohydrate are obtained from whole foods and also contain vitamins, right? But the best sources of complex carbohydrates include whole grain, green vegetables, beans, peas, oatmeal, bread, lentils, potatoes, sweet potatoes, pumpkins and corns. So you must have had all these in your diet somewhere, right? Or sometime. तो आपने देखा होगा कि जब आप ये सारी चीज़ें खाते हैं, you must have felt more healthier, right? Complex carbohydrates are good carbohydrates, right? This is the reason we say them good carbohydrates. Simple carbohydrates are sugars made of only sugar molecules. These carbohydrates are quickly digested and are the quickest source of energy. As we also learnt earlier, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स के एग्जाम्पल क्या थे? शुगर्स. शुगर मॉलिक्यूल्स एक बहुत सिंपल मॉलिक्यूल है. इट इज़ नॉट मेड अप ऑफ एनी अदर कार्बोहाइड्रेट, राइट? तो बॉडी हमारी उसको क्विकली डाइजेस्ट कर लेती है. सोर्सेस ऑफ सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स इंक्लूड शुगर्स, जैम्स, स्वीट ड्रिंक्स, फ्रूट ड्रिंक्स, मोलासेस, कैंडी, मिल्क, योगर्ट, honey and brown sugar. Simple carbohydrates are bad carbohydrates. So, यहाँ से आपको क्या समझने को मिलता है कि we should have less of all these bad carbohydrates because this provide less energy. Okay? Okay, let's dive into one very interesting information. Children like you need about 2020 to 2500 calories daily. You know, a diet that gives less than 20-100 calories a day is deficient in carbohydrates. Such a deficient diet will lead to a weakness in body and the loss of stamina. तो आप लोग की जो डाइट है, अगर वो 2200 कैलोरीज से आपको कम दे पाती है, तो आपके पास जो नॉर्मल बॉडी को फंक्शन करने के लिए चाहिए, उससे आपकी बॉडी पे कम पहुंच रहा है, तो आपको डेफिशिएंट डाइट कहलाई जाएगी. ओके, लेट्स गेट टू द नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ फूड व्हिच इज फैट्स. Fats are the sources of more energy. Like carbohydrates, fats act as a fuels in our body, but they provide more energy than carbohydrates.
तो जो फैट्स होते हैं वो हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ऑलराइट, और वो हमारी बॉडी को फ्यूल करते हैं ताकि हमारी बॉडी नॉर्मली और बहुत एफिशिएंटली फंक्शन करे. द अमाउंट ऑफ फैट्स वी नीड depend upon our age and physical labor. For example, laborers and sport person use up a lot of energy on physical activity than the person working in office. Hence, they need more fats and carbohydrates. Okay? So, इससे आपको क्या समझ आया कि हमें fats हमारी need के हिसाब से चाहिए होते हैं. So, if you are working or you are very active, तो आपको ज़्यादा फैट्स चाहिएंगे, बट अगर आपका फिजिकल एक्सरसाइज कम है तो आपको कम फैट्स चाहिएगा. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज. नाउ फूड आइटम्स लाइक बटर, घी, ग्राउंडनट ऑयल, सोयाबीन ऑयल एंड मस्टर्ड ऑयल आर द सोर्सेज ऑफ फैट्स. You must have had all these things in your home, right? These sources contain visible fats, but food items like meat, fish, eggs, and all types of nuts contain invisible fats. In many processed foods, items like chips, snacks, etc., fat is present as a main ingredient. तो दो टाइप के फैट्स पढ़े हमने, राइट? एक है कि इनविजिबल फैट, एक है विजिबल फैट. तो जो बटर है, ग्राउंडनट ऑयल हो गया, इसमें विजिबल फैट्स होते हैं. बट कुछ चीज़ें हैं लाइक जो हम मीट है या जो फिश है, इनमें इनविजिबल फैट्स होते हैं. ओके? और जो हम प्रोसेस्ड फूड खाते हैं लाइक चिप्स, स्नैक्स, फैट्स उसका एक मेन इंग्रेडिएंट होता है. ऑलराइट, लेट्स गेट टू वन मोर इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, which is fats that are used for cooking or added to the food and can be easily seen are visible, while those that contribute to the taste and flavor of a food but cannot be seen are invisible. So it is very simple. Visible as the name suggests, अगर आप उसको देख पा रहे हो, alright, तो वो visible fats हो गए. But if you cannot see it, right, and it is adding to a flavor of the food, that is invisible fat. Okay? तो जैसे आपने देखा होगा चिप्स जो हो गई, जो प्रोसेस फूड्स हैं, उसमें हमें फैट दिखता तो है नहीं, बट फ्लेवर कितना इन्हांस होता है, राइट? सो दोज आर इनविजिबल फैट. वेयर एज इफ यू आर हैविंग आलमंड्स, ओके, उसमें तो हमें विजिबल दिखता है फैट, राइट? तो वहाँ पे विजिबल फैट है, वहाँ पे उसका कोई भी जो फैट का कंपोनेंट है वो उसके टेस्ट को इन्हांस करने में नहीं हेल्प करता. ओके, नाउ लेट्स डाइव टू द रोल ऑफ फैट्स इन आवर डाइट. फर्स्ट, fats are concentrated sources of energy. That is, a little amount of fat gives more energy. Since fats एक concentrated source of energy है, तो थोड़े से में हमें बहुत सारी एनर्जी देता है. Second, fats provide us an insulation against cold. तो हमें सर्दी से भी बचाता है. Third point, fats protect our delicate organs from being injured. You know what? हमारी पूरी बॉडी में फैट्स डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसकी वजह से आपने देखा होगा जब हम कई बार गिरते भी हैं तो हमारे बॉडी ऑर्गन्स को कुछ हार्म नहीं होता. ऑलराइट, सो दिस इज अ रोल, वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ फैट्स. नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट, फैट्स carry essential fatty acids and fat soluble vitamins inside the body. फैट्स के अंदर फैटी एसिड्स होते हैं, फैट soluble vitamins होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं. एंड द फिफ्थ वन, very unique and very important, fats add flavor to our food. Next, a body has some advantages of fat deposits in small quantity. That is, it helps to cushion our delicate body organs. This is what we discussed right now. Do you remember? It also prevents heat loss from the body surface. But too much of fat deposition is harmful to the body and causes obesity. Alright? Now, let's find and answer one question. What do you think? Is junk food the only reason for obesity? क्या जंक फूड खाने से ही आप मोटे होते हो? What do you think? And ponder about it.
All right? Okay, let's do one more experiment. The aim of the experiment is to test the presence of fats in butter. All right? तो जो हम बटर खाते हैं घर में, उसमें हम देखेंगे कि फैट्स प्रेजेंट होता है कि नहीं होता. All right? What all we will require? Butter, a piece of white paper and a source of light. Okay, let's move towards the method. First step is put a small amount of water on the paper. Okay? Next, let the paper dry and now hold it in front of a source of light. तो आप लोग को क्या करना है? एक स्मॉल अमाउंट ऑफ बटर को एक पेपर पे लेना है और फिर उसको ड्राई होने के लिए छोड़ देना है. All right? Now, hold it in front of a source of light. वो जो पेपर ड्राई हो गया है, अब उसको एक source of light के सामने रखना है. Okay? This is the whole experiment. Now let's analyze. You will analyze a translucent spot on the paper through which light passes. This is very interesting. आप लोगों ने देखा होगा अपने घर में. Let's get to the inference of this experiment. It indicates the presence of fats in butter. अब जो हमने पेपर पे एक ट्रांसल्यूसेंट स्पॉट देखा, वो किसकी वजह से था? बटर की वजह से था. All right? वो बताता है हमें प्रेजेंस फैट्स का बटर में. ऑल राइट, लेट्स गेट टू द नेक्स्ट कॉम्पोनेंट ऑफ फूड विच इज प्रोटीन्स. एवरी सेल इन द ह्यूमन बॉडी कंटेन्स प्रोटीन. फॉर डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट्स our body requires particular type of substances called enzymes. These enzymes belong to a class of substance called proteins. तो हमारी सेल में, हमारी सारी सेल में इनफैक्ट प्रोटीन्स प्रेजेंट होता है. ऑलराइट? और वो क्यों प्रेजेंट होता है? क्योंकि अब हमने कार्बोहाइड्रेट्स लिए, है ना, एनर्जी का सोर्स लिया, तो उसको डाइजेस्ट भी तो कोई करेगा. वो काम कौन कर रहा है? एंजाइम्स. ओके, वी विल स्टडी व्हाट आर एंजाइम्स. बट एंजाइम्स हैं क्या? एंजाइम्स आर प्रोटीन. हेंस प्रोटीन्स synthesize enzymes which help in the process of digestion. प्रोटीन्स एंजाइम बनाते हैं, वो ही डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं. ओके, और मसल आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स. स्किन, हेयर, nails and all are made up of proteins. Blood also contain a special protein which is called hemoglobin that carries oxygen that we breathe to the various organs of our body. ये तो हम सब ने सुना होगा, राइट? जब हम ब्लड टेस्ट के लिए जाते हैं तो वहाँ पे होता है ना हीमोग्लोबिन कितना है, तो इट इज़ टॉकिंग अबाउट दैट. और हमें कहाँ कहाँ से मिल रहा है प्रोटीन? विल स्टडी इन द नेक्स्ट पेज. नाउ foods like meat, fish, eggs, milk, soybeans and all the pulses are rich in proteins. Some proteins are considered essential in our daily diet as the body stores limited amount of protein. अब हमें ये तो पता चल गया कि प्रोटीन्स कहाँ से मिल रहा है, बट सारे प्रोटीन्स उतने एसेंशियल नहीं होते क्योंकि हमारी बॉडी के पास एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ स्टोरेज है प्रोटीन्स को स्टोर करने के लिए. ओके, एक्सेस प्रोटीन्स आर either broken down और excreted as यूरिया. तो जो ज़्यादा प्रोटीन हमारी बॉडी में इकट्ठा हो जाता है उसको बॉडी एक्सक्रीट कर देती है या फिर उसको तोड़ के रख लेती है. देयर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन टू अंडरस्टैंड विच इज calorie is the unit used to measure energy. Calories in our diet come from fats, proteins and carbohydrates. Now we will study about the role of proteins in our diet. First, proteins build new tissues as well as help to maintain existing ones. Hence, proteins help in growth of the body. प्रोटीन्स जो हैं वो हमारी बॉडी में हेल्प करते हैं टिश्यू के बिल्डअप में. ओके, तो हमारी ओवरऑल ग्रोथ को भी हेल्प करते हैं. नेक्स्ट, प्रोटीन्स हेल्प इन मेकिंग हार्मोन्स एंड सम विटामिन्स. तो जो हमारी बॉडी में हार्मोन्स हैं, विटामिन्स हैं, सब किससे बने हैं? प्रोटीन से.
When energy requirement of our body is not fulfilled from carbohydrates and fats, proteins are used for energy. अब हम इससे पहले पढ़ा था ना, carbohydrates are used, fats are also used as a component of food. But अगर इन दोनों से भी हमारी बॉडी को एनर्जी नहीं मिल पाती है, तो नेक्स्ट व्हाट इज यूज्ड? प्रोटीन इज यूज्ड बाय आवर बॉडी. द फोर्थ रोल इज proteins are also important for growth and development during childhood, adolescence and pregnancy stage. ये stages में प्रोटीन का रिक्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, लेट्स डू वन मोर एक्सपेरिमेंट. So, the aim of our next experiment is to test the presence of protein in soybean. Let's see what all we will require. We will require a few soybeans, test tube, copper sulfate solution, caustic soda solution, dropper and water. Okay, now let's get to the methods. Grind a few soybeans and put them into a test tube. Okay, and then add 10 drops of water and shake the test tube. आपने सोयाबीन ग्राइंड किया, उसको टेस्ट ट्यूब में डाला. अब उसमें आप 10 ड्रॉप्स क्या डालेंगे? वाटर, और उसको शेक कर लेंगे ताकि एक पानी और सोयाबीन का एक मिक्सचर बन जाए. नेक्स्ट स्टेप इज add 2 drops of copper sulfate solution and 10 drops of caustic soda solution to the test tube using dropper and shake the test tube. तो इस स्टेप में हमें क्या चीज़ें डालनी हैं? 2 चीज़ें, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन एंड कास्टिक सोडा सोल्यूशन. ओके, और फिर हमें इसे शेक कर लेना है. नाउ लेट्स गेट टू द एनालिसिस पार्ट. You will analyze that the color of the soybean solution turns purple or violet. Like this. तो जो आपने टेस्ट ट्यूब में solution लिया था, it will change its color to purple color. Now, what we have learned from it? Let's get to the inference. Appearance of violet color shows the presence of protein in soya bean. जो ये protein का जो water का जो color change हुआ है, that is because of the protein. Let's pull your sleeves and get to the next topic. In the following table, 5 food items have been listed. Test the presence of starch, protein and fat in each food item. Now, completing the given table, write Y if the given nutrition is present and N if it is absent. Okay? Let's get to the exercise. We have raw potato. So, what is present in raw potato? Starch, protein or fats? What do you think? It is starch. Next, the cheese. What do you think cheese contains of? It is made up of fats. Next, the peanuts. What do you think the peanuts are made up of? Remember your notes? Peanuts is made up of fats. Now let's see the 4th food item, which is cooked rice. Cooked rice is made up of what? Starch. It has carbohydrates in it. Next is coconut oil. Coconut oil is made up of what? Proteins. Alright, did you enjoy this exercise? Okay, let's move to a very important topic, which is protein deficiency. अब अगर प्रोटीन हमारी बॉडी में डेफिशिएंट हो जाएगा, अगर वो कम हो जाएगा, तो उससे क्या होगा? इसीलिए उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि हमें उसे मेंटेन करना है. सो लेट्स स्टार्ट एंड रीड अबाउट व्हाट इज प्रोटीन डेफिशिएंसी. A diet that does not have enough proteins will lead to malnutrition. Protein calorie malnutrition is also called protein energy malnutrition, PEM.
तो अगर हमारी बॉडी में प्रोटीन का डेफिशिएंसी हो जाएगा तो व्हाट इट इज़ कॉल्ड? इट इज़ कॉल्ड malnutrition. And protein calorie malnutrition is also called what? PEM. Okay, let's move to the next page. Insufficient amount of proteins in diet causes a disease called kwashiorkor. This disease affects children living in the poverty in tropical and subtropical part of the world. ये जो डिजीज़ है ये मेजरली उन बच्चों को इफ़ेक्ट करती है जो पोवर्टी में है, जो गरीबी में है, जो बेसिकली ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल पार्ट ऑफ वर्ल्ड में रहते हैं. दिस डिजीज स्टॉप्स ग्रोथ एंड कॉजेज चिल्ड्रन टू हैव ब्लॉटेड बेलीज एंड थिन आर्म्स एंड लेग्स. तो इसके 3 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? ब्लॉटेड बेलीज, थिन आर्म्स एंड लेग्स. It may also cause changes in texture and color of their skin and hair. Skin and hair. Kwashiorkor is fatal unless the patient receives adequate protein intake along with a sufficient supply of calories through food. So basically इस disease में patient तभी बेहतर हो सकता है तब तक उसको अच्छा protein intake मिले. Okay? If the diet is especially low in calories, then the condition is called marasmus. It is a severe form of malnutrition. It usually attacks infants and young children and causes extreme loss in weight and weakness. Okay, तो जैसे अभी हमने देखा क्वाशियोकोर में प्रोटीन डेफिशिएंसी हो जाती है और अगर जो कंपोनेंट्स ऑफ फूड हैं अगर उसमें कोई डेफिशिएंसी है, अगर कैलोरीज नहीं मिल पा रही हैं सभी को मिला के, सारे कंपोनेंट्स ऑफ फूड को मिला के, तब हमें क्या कॉज होता है? marasmus. Okay, let's get to the next topic. The disease that are caused by the deficiency of essential nutrients are called deficiency diseases. These diseases are non-communicable diseases because they cannot be transmitted from one person to another. Okay, तो जो भी diseases जो डेफिशिएंसी से क्रिएट होती है, न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी से क्रिएट होती है, उनको क्या बोलते हैं? डेफिशिएंसी डिजीजेस. और ये डिजीजेस एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैलती, इसीलिए क्या बोलते हैं? नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस. ओके, लेट्स गेट टू द अनदर कंपोनेंट ऑफ फूड व्हिच इज विटामिन्स. Vitamins are required by our body for proper growth and maintaining good health. Vitamins help in protecting our body against diseases. Okay? तो हमें लड़ाई करने के लिए हेल्प करता है किससे? वायरसेस से, बैक्टीरिया से, जो हमारी बॉडी को इफेक्ट करते हैं, जो हमारी बॉडी को डिजीज में लाते हैं. Different vitamins have many names. For example, A, B, C, D, E and K. Each type of vitamin is very specific in its function. Okay? Vitamins are required in very minute quantities by our body, but their insufficient supply in diet leads to nutritional deficiency disease. Okay? Vitamins जो हैं different types के होते हैं, हमने देखा A to K, और इनका very specific function होता है. Alright? और ये बहुत ही minute quantities में चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं. Okay? But इनका insufficient supply अगर बाहर से मिलता है, अगर ये ज़्यादा नहीं मिल पाते हमें, तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीजेज हो जाती हैं. ओके, लेट्स स्टडी अबाउट वन ऑफ द साइंटिस्ट. पॉलिश अमेरिकन बायोकेमिस्ट कैसिमिर फंक introduced the concept of vitamins. He had read an article according to which people who consume brown rice were less likely to suffer from beriberi. What is beriberi? Beriberi is basically a kind of disease which is caused by the deficiency of vitamin B. Okay? Funk isolated the substance responsible for this property and named it vitamins. Okay? Later, the E at the end of the vitamins was removed and the term vitamins became widely acceptable. Okay, so this is very important. Next, let's get to one more experiment, and the aim of the experiment is to test the presence of vitamins in food.
What all we will require? We will require lemon juice, indophenol, blue colored, test tube and dropper. What are the methods? The first step, we will fill about 1/3 of the test tube with indophenol. Next, we will add a few drops of lemon juice to it using dropper. तो हमने एक टेस्ट ट्यूब को 1/3 भरा, ओके, इंडोफिनॉल से, और उसमें हमने कुछ ड्रॉप्स लेमन की डाली यूजिंग ड्रॉपर. नाउ वी विल शेक द टेस्ट ट्यूब वेल, ओके. Now let's get to the analysis. You will analyze that the blue color of the indophenol gets disappear. अब हम देखेंगे जो इंडोफिनॉल का ब्लू कलर था वो डिसअपियर हो जाएगा. तो हमारा जो सोल्यूशन टेस्ट ट्यूब में है वो कैसा दिखेगा? वाटर की जैसे, बिल्कुल वाइट. So what is the inference out of this experiment? It indicates the presence of vitamin C in lemon juice, as indophenol is an indicator that turns colorless in the presence of vitamin C. Okay, तो ये कलरलेस होने से हमें क्या पता चला कि लेमन में विटामिन सी प्रेजेंट होता है. क्यों? क्योंकि इंडोफिनॉल एक इंडिकेटर की तरह काम करता है जो विटामिन सी की प्रेजेंस में कलरलेस हो जाता है. ऑलराइट, let's get to the next page. Now we will learn about the role of vitamins in our diet. Vitamins help boost immunity, strengthen bones, heal wounds, bolster eyesight and assist in obtaining energy from food. देख रही है कितने सारे रोल्स हैं विटामिन्स के. हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करता है, बोन्स को स्ट्रेंथन करता है, हमारी चोट को भी वो सही करता है, हमारी आई साइट को और शार्प बनाता है और हमें एनर्जी फूड से लेने में हेल्प करता है. नेक्स्ट इज, many of the vitamins help enzyme to do their task since they regulate body activities. तो जो विटामिन्स है वो एंजाइम को भी उनका प्रॉपर फंक्शन करने में हेल्प करते हैं ताकि बॉडी एक वेल रेगुलेटेड फॉर्म में चलती रहे. नाउ the important vitamins, their sources, function and deficiency diseases and their symptoms are given in this table below. Vitamin A. The source of vitamin A is green leafy vegetable, fruits, butter and etc. You must have seen spinach, okay, broccoli in your home. So these are all the source of vitamin A. The function of vitamin A is it keeps eye, hair and skin healthy, but the deficiency of vitamin A causes night blindness and loss of vision. So the symptoms are dryness of eyes and improper vision. The next vitamin is vitamin B. So it is found in eggs, grains and sprouts. The function of vitamin B is it helps in digestion. So do you see how important are these vitamins? But the deficiency of disease causes beriberi, also known as thiamine deficiency. The symptoms of the disease is inflammation of nerves, digestive problems. So कैसे पता चलेगा हमें beriberi disease के बारे में? Just looking at the symptoms. जो हमारी नर्व्स हैं वो इन्फ्लेमेट हो जाती है, वो साइज में थोड़ा बढ़ जाती है, ओके, और डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है. नेक्स्ट इज द विटामिन B2 which is found in milk and vegetables and etc. So the function is that it keeps skin and mouth healthy. So the deficiency of vitamin B2 causes riboflavin and the symptoms are blurred vision and swollen throat. Okay, next vitamin is vitamin B12 which is found in eggs, fish, meats and etc. The function of this vitamin B12 is it helps in the formation of red blood cells. जो हमारी बॉडी में ब्लड होता है, it is made up of red blood cells, तो ये उसके फॉर्मेशन में हेल्प करता है. Alright, but the deficiency of vitamin B12 causes anemia. Alright, anemia is the deficiency of red blood cells. Okay, so the symptoms of this disease is pale skin, lack of stamina and appetite.
वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमें अपनी स्किन रेडिश ना दिख के थोड़ी येलोइश दिख रही है, या हमें स्टैमिना कम लग रहा है, या भूख कम लग रही है, दिस इज अ सिम्टम ऑफ एनीमिया। द नेक्स्ट विटामिन इज विटामिन सी। Citrus acids is present in the citrus fruits, tomatoes, sprouted pulses. So these are the sources of vitamin C. The function of vitamin C is that it helps to resist infections and keeps teeth and gums healthy. But the vitamin C deficiency causes scurvy. So what are the symptoms? Loosening of teeth, slow healing of wounds and weakness. तो अगर हमें टीथ लूज लग रहे हैं, अगर वाउंड्स जो हमारे वो स्लो हील हो रहे हैं, वीकनेस फील हो रही है, तो इट माइट बी अ रीजन दैट यू हैव स्कर्वी। ओके, नेक्स्ट विटामिन इज विटामिन डी, which is found in milk, fish, eggs and etc. It helps in normal growth of bones in children, but the deficiency causes rickets, which can be seen by delayed growth and bones and deformity. Okay, next vitamin is vitamin E. Green leafy vegetables, milk, nuts all contain vitamin E. It keeps our skin healthy, but the deficiency of this vitamin causes neuromuscular problem. Okay, what is neuromuscular problem? न्यूरॉन से रिलेटेड, लेट्स से हमारी नर्व से रिलेटेड और हमारे मसल से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती है उसको हम बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम। बट हाउ कैन वी फाइंड दीज आउट? द सिम्टम्स आर मसल वीकनेस। ओके, नेक्स्ट विटामिन इज विटामिन के। So it is found in green leafy vegetables, example spinach, cabbage, etc. and it helps in blood clotting. What is blood clotting? हमारे जब चोट पे ब्लड आता है बट वो थोड़ा सॉलिडिफाई होने लगता है, दैट इज ब्लड क्लॉटिंग। तो विटामिन के हेल्प से हो रहा है। ओके, सो द डिजीज विच कैन बी कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के इज हेमोरेजिक डिजीज। ओके, एंड द सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज इज डिफिकल्टी इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। अगर डेफिशिएंसी होगी तो ब्लड क्लॉट अच्छे से नहीं होगा। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। Now, let's first find out why is vitamin D called the sunshine vitamin. Just think about it, okay? You must have heard that your parents are saying that go in sun and take vitamin D. So think about it, why it is called sunshine vitamin. Let's get to a very important information. An estimated 259 to 500 million children in the world are becoming blind every year due to deficiency of vitamin A, and half of them die within a year of losing their vision. Let's get to our next topic, which are minerals. So, our body needs small quantity of some elements such as sodium, potassium, calcium, magnesium, chlorine, iron, fluorine, sulfur, phosphorus and iodine. These are all the example of minerals. These elements are called minerals, although they are required in very small quantities, but each one is essential for building organs and good health. Okay? So, ये बहुत ही कम quantities में required होते हैं, but इनका importance इतना ज़्यादा है कि वो small quantity भी बहुत important है हमारे body में पहुँचना। Let's find an answer to a question. Which mineral is present in the highest quantity in human body? This is your homework, you have to find this out, okay? Okay, let's get to the role of minerals in our diet. Minerals like vitamins support the normal growth and development of our body, as we just discussed above. Next, they also act as essential components in various metabolic process in the body. Very important. तो जो भी हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रहे हैं एनर्जी बनाने के लिए, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कौन? मिनरल. The important minerals
their sources, function and deficiency disease, and their symptoms are given in the following table below. Let's study this. So our first mineral is calcium. It is found in milk and green leafy vegetables. The function of the calcium is that it strengthens bones and teeth, but the deficiency of this disease causes osteoporosis in adults and rickets in children. Alright, तो कैल्शियम की डेफिशिएंसी से ऑस्टियोपोरोसिस होता है, जिसमें बोन्स में आपको लूज फील होगा, आपको कम एनर्जी फील होती है, बट ये एडल्ट्स में बोलते हैं. सेम गोज फॉर चिल्ड्रन. अगर ये चिल्ड्रन में हो रहा है तो इसको क्या बोलेंगे? रिकेट्स. व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ कैल्शियम डेफिशिएंसी? दीज आर ब्रिटल बोन्स, stunted growth, weak teeth and bones. Next mineral is phosphorus. It is found in cereals and pulses. The function is that it makes bones strong. The deficiency of phosphorus causes hypophosphatemia. The symptoms are mental retardation and weakening of bones. The next mineral is iron. It is found in cereals, pulses and meats. The function of iron is that it helps in the formation of hemoglobin, but the deficiency of iron causes anemia. The symptoms include pale body color, body fatigue and white nails. Alright, so the next mineral is iodine. It is found in fish and salt. The function includes regulates the proper working of thyroid gland. Okay, so in our neck we have a thyroid gland, and iodine is very important for its proper functioning. But the deficiency of iodine will cause goiter, and how we will see that? The symptoms are enlargement of thyroid gland and weight gain. Okay, so the next mineral is sodium and potassium. It is found in salt and cheese, and it helps in maintaining fluid and blood volume. हमारी बॉडी में जितना भी ब्लड है और बाकी फ्लूइड है उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है कौन? सोडियम एंड पोटेशियम. बट द डेफिशिएंसी ऑफ दीज मिनरल्स will cause hyponatremia and hypokalemia, and the symptoms are weakness, dehydration and muscle cramps. Next mineral is magnesium, which is generally found in green leafy vegetables and cereals. The major function of magnesium is to regulate the functioning of muscles and nerves, but the deficiency of magnesium causes hypomagnesemia. Alright, and the symptoms are loss of appetite and upset stomach. Let's get to the next page and deep dive into this topic. Next mineral is zinc. It is generally found in peas, beans and peanuts, and it helps in the strengthening of the immune system and helps in cell division. But the deficiency causes hemophilia, and the symptoms are loss of appetite, slow blood clotting. The next mineral is fluoride. It is generally found in seafood and tea. So the function of this mineral is that it makes teeth and bones stronger. So the deficiency causes tooth decay, and the symptoms are increase in tooth decay. So let's get to the next topic, which is water. A person can live without food for several weeks but would die in a few days from lack of water. Okay, 60 to 70% of our body weight is due to the presence of water. हमारी body में 70% जो weight है हमारा, that is because of the water. Okay, water is a means of transporting nutrients and other components in the organism. Vegetables and fruits contain high percentage of water. We should drink a lot of water to remove wastes and toxins from our body. It is advised to drink at least 8 to 10 glasses of water every day. Now, can you see the importance of water? Vegetables में इतना ज़्यादा present होता है. हमारी body majorly water से बनी है.
अब अगर हमारे टॉक्सिन्स हमारी बॉडी से बाहर निकालने हैं तो वाटर बहुत ज़रूरी है, इसीलिए इट इज़ एडवाइज्ड टू ड्रिंक एटलीस्ट 8 to 10 ग्लास ऑफ वाटर to stay away from dehydration. Let's see importance of water in our diet. First, it helps to regulate the body temperature. Second, it helps our body to absorb nutrition from the food. अब न्यूट्रिशन में कैसे हेल्प करता है? जो भी हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब हो रहा है उसको वाटर फूड से निकालता है ताकि ये ब्लड में पहुंच सके. ओके, नेक्स्ट, इट ट्रांसपोर्ट्स न्यूट्रिशन थ्रू आउट द बॉडी. जैसे कि ब्लड थ्रू आउट द बॉडी हेल्प करता है न्यूट्रिशन पहुंचाने में, वैसे ही वाटर भी करता है. इट हेल्प्स इन द एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन एंड स्वेट. यूरिन और जो स्वेट है वो भी एक काइंड ऑफ वाटर है, राइट? तो ये हेल्प करता है टॉक्सिन्स को एक्सक्रीट करने में. नेक्स्ट इज it is a medium for most of the reactions occurring in our body. अब रिएक्शन हमारी बॉडी में कहीं तो अकर हो रहे हैं, किसी चीज़ में तो अकर हो रहे हैं, सो वाटर हेल्प्स इन दैट. वाटर में अकर होते हैं. ओके, नाउ लेट्स गेट टू द नेक्स्ट सेक्शन विच इज let's get to the next section where we will perform one more experiment. And the aim of the experiment is to test the presence of water in food. What all we will require? Food samples like fresh potato slices and spinach leaves, petri dishes, a balance and a weight box. Okay? These things. Next, the methods include, let's do this. Take some potato slices and spinach leaves in a separate dish. Weigh bottle of them and note down your observation. तो आपको क्या करना है, एक दोनों पेट्री डिशेस में स्पिनच या फिर पोटैटो आप ले लो और दोनों का वेट कर लो कि कितना मास है उनका, कितना वेट है. नेक्स्ट स्टेप इज कीप दिस डिशेस इन एन oven at 30 degree to 90 degree Celsius or in sunlight for few days. Okay? Next step is now weigh the food samples again and note down your observation. तो अब आपको जब आपने देख लिया उनका एक्चुअल वे क्या था, अब आपको सनलाइट में या ओवन में रख दीजिए जब तक वो ड्राई हो जाए. लेट्स गेट टू द एनालिसिस पार्ट. You will analyze that there is a reduction in weight of the two samples due to the loss of water. अब वाटर का इसमें लॉस हुआ है, ऑलराइट. ये हमें कैसे पता चल रहा है? क्योंकि उनका वेट लॉस हो गया. Okay, so what's the inference? Thus, the reduction in weight indicates the presence of water in them. Very important. Let's get to the next topic, which is water deficiency. अभी हमने प्रोटीन डेफिशिएंसी के बारे में पढ़ा, आयरन डेफिशिएंसी के बारे में पढ़ा और देखा कि उनसे क्या डिजीज कॉज होते हैं. लेट्स गेट टू दिस टॉपिक. Water is very important for us. Daily, we lose water in the form of sweat and urine. So to maintain the balance, we should drink plenty of water daily. अब देखो, रोज स्वेट और यूरिन के फॉर्म में हमारी बॉडी वाटर लूज करती है. ओके, तो हमें उतना ही ज़रूरी है कि वाटर हम वापस से लेके बैलेंस क्रिएट कर दे बॉडी में, बिकॉज वाटर का डेफिशिएंसी भी कुछ कॉज कर सकता है. लेट्स स्टडी दैट इन द नेक्स्ट पेज. Severe loss of water soluble minerals from the body causes dehydration, making the body weak. The blood gets thicker in dehydration and therefore it moves more slowly in the body, causing severe pain and cramps in the muscles. तो अगर हमारी बॉडी में पानी कम है तो उससे क्या हो रहा है? तो हमारा जो ब्लड है जो पूरी बॉडी में घूमता है, हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, वो थिक हो जाता है. थिक होने से क्या, उसका मूवमेंट स्लो हो जाएगा और वो क्या करता है, फिर बॉडी में डिफरेंट जगह पे पेन क्रिएट करता है, क्रैम्प्स क्रिएट करता है और मसल्स को अच्छे से वर्क नहीं करने देता. दिस कंडीशन कैन बी ट्रीटेड बाय ओरल डिहाइड्रेशन सोल्यूशन, ऑल्सो कॉल्ड ORS, or a solution of salt, sugar and water, which should be given as soon as possible. Okay, so basically oral dehydration solution में क्या क्या प्रेजेंट होता है? सॉल्ट,
sugar and water. Okay. In the summer, if a lot of water is lost from the body, then a person can be victim of sunstroke. Hence, drinking water after a regular interval keeps us fit and healthy. इसीलिए पता है समर्स में बहुत इम्पॉर्टेंट है अपनी बॉडी को हाइड्रेट करते रहना, पानी पीते रहना ताकि सनस्ट्रोक से बच सकें. Okay, but remember, do not wait for being thirsty for drinking water because when we feel thirsty, water deficiency has already been taken place in our body. तो यहाँ पे हमने क्या सीखा कि जब प्यास लगे सिर्फ तभी पानी नहीं पीना. ऑलराइट, क्योंकि अगर हमें प्यास लग रही है तो ऑलरेडी मतलब हमारी बॉडी डेफिशिएंसी में है. तो हमें गर्मियों में स्पेशली जल्दी से जल्दी पानी पीते रहना है. लेट्स गेट टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज रफेज. Roughage is also called fiber. It does not contain any nutrition but still plays a very essential part of every healthy diet. In fact, it is undigested part of carbohydrates. Most vegetables and fruits and whole grains provide roughage in our food. तो हमें फूड में कहाँ से मिलता है रफेज? वेजिटेबल से, फ्रूट से, होल ग्रेन से. और वो होता क्या है? Undigested part of carbohydrates. It is advised to consume whole fruits and vegetables rather than their juices, as juicing can remove the fruit of vegetables, pulp and skin, where the most of the fiber is found in the fruit or vegetable. तो इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम. जैसे शुगर केन होता है ना, शुगर केन का हम जनरली जूस पीते हैं, बट उसका जो बाकी बचा हुआ पार्ट है विच इज कॉल्ड एज रफेज, जिसमें फाइबर होता है. ओके, ऑल प्लांट्स प्रोडक्ट्स कंटेन रफेज इन द फॉर्म ऑफ सेल्यूलोज. तो वो ड्राई पार्ट जो होता है जूस निकालने के बाद जो शुगर केन का बचता है, व्हाट इट इज कॉल्ड? इट हैज सेल्यूलोज. सेल्यूलोज swells up in the intestine by absorbing water. Thus, it adds bulk to these feces and keeps it soft. This ensures the smooth movement of waste through the rectum. अब देखो, अभी हमने सबका इम्पोर्टेंस पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट का क्या इम्पोर्टेंस है, मिनरल्स का क्या इम्पोर्टेंस है. वैसे ही जो फाइबर होता है हमारी डाइट में इतना इम्पोर्टेंट है. जो हमारा फीकल मैटर होता है उसको स्मूथ मूवमेंट के लिए, ताकि वो रेक्टम से ईजिली निकल सके, वहाँ पे फाइबर बहुत इम्पोर्टेंट है. ओके, लेट्स गेट टू द नेक्स्ट टॉपिक, इम्पोर्टेंस ऑफ रफेज इन आवर डाइट. So, it prevents constipation and ensures proper bowel movement, as we just discussed above. Next, it provides the bulk on which the muscle of the intestine can act. This helps our body to get rid of undigested food. So, let's say आपके body में कुछ food undigested रह गया, okay? तो ये फाइबर आपको हेल्प करेगा आपकी बॉडी को वो undigested food को बॉडी से निकालने में. सो बेसिकली आपके इंटेस्टाइन के लिए बहुत अच्छा है. नेक्स्ट, इट हेल्प्स इन रिटेनिंग वाटर एंड इट रिड्यूसेस एक्सेस ऑफ एसिडिटी इन द स्टमक. ऑलराइट, नेक्स्ट लेट्स गेट टू द इंफॉर्मेशन. द फादर ऑफ मेडिसिन, हिपोक्रेट्स, was one of the first physician to argue for the benefits of fiber in the form of bran to help keep the large intestine healthy. ओके, सो फादर ऑफ मेडिसिन कौन है? हिपोक्रेट्स. ओके, और ये फर्स्ट फिजिशियन थे जिन्होंने हमें इंपॉर्टेंस बताया किसके? फाइबर के बारे में. लेट्स गेट टू द रिव्यू. सो नाउ वी विल डू वन ऑफ द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन एंड रेस्ट यू विल डू इन द होमवर्क. न्यूट्रिशन विच बिल्ड न्यू टिश्यूज. Okay, so we discussed nutrition in our previous pages. So you have to remember that what are the new nutrition that helps in building new tissues? What were they? Okay, so this is the type of question that we have to address. We have all learned this in our previous pages. Now, let's move to the next page. Balanced diet. This is our next topic.
Balanced diet is the diet which fulfills all the requirement of nutrition of our body. As the name suggests, balanced and diet. Balanced मतलब कि आपके body में एक balance create करे ऐसा diet. To stay healthy, it is important to take all the necessary nutrients through our diet in adequate amount. So far we have studied the importance of nutrition like carbohydrates, fats, proteins, minerals, vitamins, etc. and concluded that no single food item supplies these essential nutrients in the adequate amount. तो अब हमने पढ़ा देखा अभी कि कैसे सारी चीज़ें लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन इतने सब इम्पॉर्टेंट है, फिर भी क्या ये हमारी डाइट को एक बैलेंस और एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर पाते हैं क्या? अ बैलेंस डाइट कंसिस्ट energy giving nutrition like carbohydrates and fats, body building nutrition like proteins, and protective nutrition like vitamins and minerals. Hence, in our daily diet, all of these nutrition must be included in a definite proportion. Alright, तो अब इससे क्या समझ आया बैलेंस डाइट कैसी डाइट होनी चाहिए जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स हो, फैट्स हो जो हमें एनर्जी देते हैं, प्रोटीन्स हो ताकि बॉडी बिल्डिंग अच्छे से हो सके, और विटामिन और मिनरल हो ताकि वो हम बॉडी को अच्छे से प्रोटेक्ट कर सके और बॉडी अच्छे से फंक्शन कर सके. ओके तो इनका एक डेफिनेट प्रपोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. अलॉन्ग विद दीज न्यूट्रिशन वाटर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, सो डू नॉट बी केयरलेस विद द वाटर. पानी भी बहुत इंपॉर्टेंट है. 70% रिमेंबर, दो इट इज Though it is easily available, the drinking water must be free from soluble and insoluble. Though it is easily available, the drinking water must be free from soluble and insoluble impurities, germs and bacteria. Many diseases like jaundice, cholera, diarrhea, diphtheria, hepatitis, etc. are caused by drinking impure water. तो वाटर का भी इम्प्योर से प्योर होना कितना इम्पॉर्टेंट है. देखा कितने सारे डिजीजेस हमें इम्प्योर वाटर से हो सकती है. नाउ लेट्स अगेन पुल योर स्लीव्स एंड नाउ व्हाट यू हैव टू डू, मेक अ लिस्ट ऑफ द न्यूट्रिशंस which were present in your food that you ate yesterday. Check whether your diet was a balanced diet or not. Okay? So you have to list all the nutrition in this column and check what were all the nutrition that were present in those foods and write them here. Okay, in the form of yes and a no, and then decide was your diet a balanced or not. Okay, आप ये लोग सब करोगे. Okay, next move to the next topic. This is very important and you must know it. Many children in our country do not get a balanced diet. It may be due to ignorance or poverty. The Supreme Court of India has passed a rule according to which every child who goes to a primary school is entitled to get nutritious cooked midday meal. हमारी कंट्री में इतने सारे बच्चे हैं जो बैलेंस डाइट नहीं ले पा रहे हैं. It is because of the ignorance or the poverty. But the Supreme Court of India has passed a law जिसमें उन्होंने बोला है कि हर बच्चे को एक nutritious cooked meal which is by the name of midday meal मिलना ज़रूरी है. A healthy midday meal can help to protect children from hunger and provide essential nutrition. These meals, 100 grams per day, provide children with at least the minimum requirement of carbohydrates and proteins each day. All efforts are made to make the meals as varied and wholesome as possible. तो ये कितना अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, कि बच्चों को एक ऐसी मील प्रोवाइड कर रही है जिसमें रिच है कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से, ताकि उनको अच्छे से ग्रोथ हो पाए. लेट्स गेट टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज malnutrition. If a person does not get adequate food
or his diet does not contain all the nutrition, then the person becomes weak. Hence, when the body does not get adequate nutrition, it is said to be suffering from malnutrition. तो अगर हमें बॉडी को अच्छे से नहीं मिलेगा डाइट, बैलेंस डाइट नहीं मिलेगी तो क्या होगा? malnutrition. Malnutrition essentially means bad nourishment. Malnutrition in all its form increases the risk of diseases and early death. It's a very important information here. 2/3 of those suffering from malnutrition lives in Asia. तो जो एशिया कॉन्टिनेंट्स है उसमें 2/3 लोग रहते हैं वो जो माल न्यूट्रिशन से सफ़र करते हैं. बहुत गहरी बात है, सोचने लायक. ओके, लेट्स गेट टू द नेक्स्ट पेज. Children are more prone to malnutrition than adults. Sometimes a child gets enough food to eat, but the food does not contain all the necessary nutrition or it is unhygienic, which can cause malnutrition. Mostly इसका शिकार कौन है? बच्चे हैं rather than adults. The only remedy for malnutrition is to take a balanced and hygienic diet. क्या दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं? बैलेंस्ड और हाइजीनिक डाइट लेने हैं. If pulses, rice, chapati, green vegetables and a bit of jaggery are eaten regularly and in enough quantities, they can provide all the nourishment that the body requires. Wow! Isn't it a very good thing कि कुछ 5-6 चीज़ों लेने से ही हमारा एक डाइट बैलेंस डाइट क्रिएट हो रहा है? Good. In addition, including beans, tomato, carrot, guava, cucumber, lemon, ripe papaya, amla, etc. In a diet can complete the requirement of essential vitamins, minerals, water and roughage. However, it is advised to seek the help of nutritionist to ensure a proper and a balanced diet. Although हमें पता चल गया कि एक बैलेंस डाइट क्रिएट करने के लिए हमें ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड है, बट फिर भी एडवाइस किया जाता है कि हम एक न्यूट्रिशनिस्ट की एडवाइस पे बैलेंस डाइट लें. ओके, लेट्स गेट टू द नेक्स्ट टॉपिक. हाउ टू अटेन गुड हेल्थ. We have studied the importance of balanced diet, but what is equally important is the right way of eating. Maintaining proper cleanliness while preparing, serving and eating food is also important. It is said that sitting with crossed legs is the best posture at the time of eating. तो अब हमने ये तो देखा कि बैलेंस डाइट कितना इम्पोर्टेंट है, बट उसको हेल्दी कैसे बना जाए, हम उसके थ्रू हेल्दी कैसे बने. Now, let's see that. Some precautions which should be taken for healthy living are: chew the food well. चबा चबा के खाना, ये तो हमने बचपन से सीखा है. ओके, नेक्स्ट इज food should be cooked in a such a way that all the nutrition can be saved. अब यहाँ पे इम्पोर्टेंस है कि कैसे हमारा फूड जो कुक किया जा रहा है, या वो ओवर कुक्ड है या वो बहुत ज़्यादा ही ऑयली है, तो उसमें से न्यूट्रिशन चले जाते हैं. इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कुक कैसे किया जा रहा है फूड. नेक्स्ट इज वी शुड वॉश द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स फर्स्ट, देन पील और कट देम. तो पहले अच्छे से वेज वॉश करना चाहिए, वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स को, तभी आगे यूज़ करना है. नेक्स्ट इज fruits which can be eaten whole should not be peeled off. जो फ्रूट लेट से पूरा ही खाया जा सकता है तो उसको पील करने का जरूरत ही नहीं है. नेक्स्ट इज repeated washing of rice and pulses may remove some vitamins and minerals present in them. कई बार जब राइस और पल्सेस को हम ज़्यादा धोते हैं तो पानी के साथ विटामिन्स और मिनरल्स भी चले जा सकते हैं, तो वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है ध्यान रखने की. And last is avoiding drinking water during the meals as it dilutes the effect of digestive enzyme. अब बार बार खाने के बीच पानी पीना सही चीज़ नहीं है, क्योंकि हमारे पेट में जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, जो प्रोटीन्स होते हैं, वो डाइल्यूट हो जाते हैं, तो वो अच्छे से इफेक्ट नहीं कर पाते.
So these are some of the things which we should take care of it. Let's get to one more information. Physical activity like aerobic exercise, muscle strengthening and balance activities are beneficial to a healthy body. अब खाने के साथ साथ हमें उतना ही इम्पॉर्टेंट है हेल्दी बॉडी के लिए क्या, फिजिकल एक्सरसाइज, बैलेंस एक्टिविटी, ताकि हमारी मसल्स स्ट्रेंथन हो सके. ओके, नाउ लेट्स रिवाइज आवर होल चैप्टर थ्रू वर्ड फाइंडर्स. फर्स्ट वर्ड इज न्यूट्रिशंस. What is nutrition? The substance required in diets to stay healthy. Next is balanced diet. The diet which fulfills all the requirement of nutrition of our body. ये तो अभी पढ़ा ही है. Next is enzyme. A substance produced by a living organism that helps in various reactions within our body. Next is hemoglobin. A component of blood that is responsible for the red color of it. Next is hormones. Chemicals produced in the body to exert their functions. Next word is deficiency diseases. The diseases caused by lack of nutrition in our diet is called deficiency diseases. Next is kwashiorkor, a form of malnutrition caused by a lack of protein in the diet. Next is marasmus. Marasmus, a severe form of malnutrition resulted from an overall lack of calories. Next is metabolism. The chemical processes in an organism that are necessary for life. Next word is dehydration. A condition occurring in our body due to excessive loss of water. Next word is roughage. The undigested part of carbohydrates contained in plant products. Next word is cellulose. A substance which form fibers in plants. And our last word is malnutrition. A type of disorder caused by taking imbalanced diet. Let's get to the next page. Let's take a look to wind up our chapter. Every living organism needs food which provide essential nutrition. The main essential nutrition are carbohydrates, fats, protein, vitamins and minerals. Along with that, water and roughage are essential components of food. The main carbohydrates found in our food are in the form of starch and sugar. Carbohydrates can be simple or complex based on the chemical structure. Proteins helps in growth and development of our body. Vitamins helps in protecting our body against diseases. Minerals are essential for building organs and good health. A balanced diet consists of food which contains all the essential nutrients required by our body in proper amount. And maintaining proper cleanliness while preparing, serving and eating food is important for good health. So these are some of the points which are very important in this chapter. ये हमने सबने डिस्कस किया ही है. Now next comes the question and answer. Based on our learning, you will try to answer these questions with all your courage and willpower. Okay?